हमारे स्कूलों में बच्चों को जिस्मानी सज़ा दी जाती है, इसका मकसद बज़ाहिर बच्चे की इस्लाह करना होता है। लास्ट पैराग्राफ है, एक मौर्रख अपने अहद की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अली के साथ मैं हूं अली जमशेद, और आज की वीडियो में मैं आपके साथ सेकेंड ईयर इंग्लिश का गैस शेयर करने जा रहा हूं। उससे पहले आपको मैं एडवाइस करता हूं कि आप कोशिश करें कि पूरा सिलेबस कवर करें। अगर आप मैक्सिमम नंबर लेना चाहते हैं, 90 का टारगेट है, तो आप कोशिश करें पहले अपना जो सिलेबस है वो कवर करें, फिर ये गैस भी देख लें। इस गैस में जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का आपको मालूम ही होगा 40 मार्क्स के आते हैं। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज वाले भी शामिल हैं और एडिशनल भी शामिल हैं। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोज वाले पोर्शन में से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो द डाइंग सन है, वाई इज़ देयर लाइफ ऑन अर्थ। हाँ जी, ज़मीन पर ज़िंदगी क्यों होती है, क्यों है। Why is the universe of which our earth is a part so frightening? Give as many reasons as you can. What are temperature belts? What are planets and how did they came into being? How did our earth came into existence? हमारी ज़मीन कैसे वजूद में आई? Why is there no life on stars? Is human life confined to earth only? If so, why? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा। हाउ इज़ इट दैट आ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स चेंज आ वेंटरिंग स्टार वेंटरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। इसमें से क्वेश्चन है, हाउ हैव द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस टू गेट ओवर ओल्ड फियर्स। डू यू थिंक दैट science can help us in our fight against diseases? How has the scientific method helped us in the provision of sanitary conditions and changed the outlook and the attitude of people? Discuss how science has made man open-minded. What improvement science has brought in the water supply? Why boys fail in college के क्वेश्चन हैं। How can the failure of the students be prevented? हाँ जी, जो तुलबा हैं उनकी नाकामी को कैसे रोका जा सकता है। What do the lazy buffers do in the college? How does financial pressure lead to the failure of students? What is the mistaken ambition for a boys and what is its consequence? Why do the bright boys fail in the examination? How nervous habits can be uprooted? How are sometimes parents responsible for the failure of their sons? End of term. What was the Dish's attitude towards the weekend as a schoolboy? Dishes liked holidays for their freedom. Freedom from what? हाँ जी, किस चीज़ से आज़ादी वो पसंद करता था? आपको मालूम है वो होमवर्क और जो रूटीन थी उससे आज़ादी पसंद करता था। Why did David Dishes like holidays? ये सेम ही आ जाएगा, दोनों का एक ही आंसर। What did David Dishes do with his pocket money? Where did Dishes spend his summer holidays? What was the Dishes' general view of school life? Wishes do not come true in life, writes Dishes. What are the things he longed for but could not have? On destroying books है, what sort of books were presented by the British public to soldiers? Why could the writer not burn his books? Why should, according to the writer, bad books be destroyed? Justify the author's act of destroying books. What did J.C. Sequire मतलब finally decide to do with books? How did the writer muster up courage at last to fling the books into the river? What were the feelings of J.C. Squire after destroying books?
The man who was a hospital. What was the prescription given to the writer by the doctor? ये one of the most important question इस lesson में से. Describe Jerome's visit to the medical man. How did Jerome come to know that his liver was out of order? कैसे पता लगा था भाई उसका जिगर खराब है? बुक पढ़ने से. What is the moral of the essay? The man who was a hospital. Mention the various diseases the writer thought he was suffering from. कौन कौन सी बीमारी में मुबतला था राइटर, आपने बताना है. Why did the writer call himself a hospital? My financial career. After his misadventure in the bank, where did Leacock keep his money? Write at least 2 blunders committed by Stephen Leacock in the bank. Describe Stephen Leacock's meeting with the bank manager. How did the manager come to think that Leacock had an awful secret to reveal? Why did the manager take the writer to a private room? China's way to progress. What is meant by economic decentralization? How has the population of the cities been controlled in China? What's the secret of China's wonderful progress? Describe a day in the life of a Chinese student. Who was Zhou Enlai? How does China rely on its own resources? What is the agricultural system of China? Write a note on Chinese women. ये भी important है. Hunger and population explosion. What is the main reason of population increase today? Why is birth rate not so high in more advanced countries? What was the condition of hungry children in Kenya? How do birth rate and death rate affect the population of a country? Describe some great famines of the world. How can the problem of population explosion be solved? Define hunger. How do famines occur? How do birth rate and death rate affect the population of a country? The jewel of the world. What did Alaikum do to promote learning in Spain? इसी तरह ये आप तमाम शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से देखें. फर्स्ट ईयर एट एरो है, ये हीरोज़ के क्वेश्चन हैं. इन क्वेश्चंस को भी आपने अच्छे से देखना है. हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा. फिर आ जाता है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हीरोज़ है. लोई पास्चर के तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इधर दिए गए हैं. मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, ये भी लास्ट हीरो हैं. इस हीरो पार्ट में से भी 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवेल, इसमें ये एक पूरी लिस्ट है जिसको आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से करें. ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एनुअल पेपर में आ सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से करना है. लेकिन कोशिश करें उससे पहले कि आप पूरा सिलेबस देख लें. अगर वो बच्चे जिन्होंने अभी पूरा सिलेबस नहीं देखा, तो अगर वो ये गेस ही कर लेंगे तो उनको आसानी हो सकती है और वो अच्छे नंबर ले सकते हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स, ये इडियम्स अबाउट 100 के करीब होंगे और इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पैराग्राफ. इसमें ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. वोकैबलरी आपकी होगी तो आप ट्रांसलेशन में
मुश्किल फेस नहीं करेंगे। और ये एक लिस्ट है इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स की, इनको आपने लाजमी एग्ज़ाम से पहले देखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये सिर्फ इबादत के मजमूए का नाम नहीं। सेकंड है, हम साइंसी दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया का हर मुल्क साइंस में तरक्की करने की कोशिश कर रहा है। कॉलेजों में बदनज़मी दिन ब दिन बढ़ रही है। तलबा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते। कारोबार में दयानत से इजाफा और तरक्की होती है, क्योंकि इस तरह ख़रीदारों का दुकानदार पर एतमाद कायम होता है। इस वक्त पाकिस्तान बहुत से मुल्की और बैनुल अक़वामी मसाइल में घिरा हुआ है। हमारे दुश्मन मौजूदा ज़माना साइंस का ज़माना है। साइंस ने हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है। तालीम का असल मकसद तलबा के किरदार की तरबियत है। अगर तरबियत नहीं है तो तालीम बेमायनी है। अल्लामा इकबाल एक अजीम इंसान थे। आप इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे। ये मेरा गाँव है, ये खूबसूरत गाँव है। एक दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे अकेले लेटे हुए आराम फरमा रहे थे। एक दुश्मन उधर आ निकला। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तबाह करने के लिए पाकिस्तान के तमाम बड़े दरियाओं पर डैम बना दिए हैं। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है और लोगों की एक भारी अक्सरियत देहात में रहती है। मोबाइल फ़ोन मौजूदा दौर की ईजाद है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। हमारे स्कूलों में बच्चों को जिस्मानी सज़ा दी जाती है, इसका मकसद बज़ाहिर बच्चे की इस्लाह करना होता है। लास्ट पैराग्राफ है, एक मौर्रख अपने अहद की सच्ची और मुकम्मल तस्वीर पेश करता है, वो कोई झूठी बात नहीं लिखता। तो कोशिश करना है कि आप पूरा सिलेबस से गो थ्रू होने के बाद इस गैस को देखें। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने तैयारी नहीं की तो वो सिर्फ इस गैस को कर लें, इंशाल्लाह वो पास हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह पाक आपको कामयाब फरमाए।